The Supreme Court has recently distinguished between an in-house counsel and an advocate. तो वकील साहब की जो practice है, we can deduce it from this judgment for judicial services exams specifically. So if you are a full-time salaried employee, means you are not an advocate as per this judgment. And if you're not an advocate as per this judgment, guess what? Your time as that full-time salaried employee will not be counted as practice towards attempting the judiciary का exam, be it of any state. एक exception ज़रूर है, thanks to Rule 49 of the Bar Council of India rules. I'll provide everything on your screen. वहाँ पर ये लिखा हुआ है that nothing in this rule shall apply to people who are law officers of the state. तो वहाँ पे despite you being a full-time salaried employee there, so that time you are being categorized as an advocate and you will not be asked to surrender your license etc. तो दो तरीके की यहाँ पे नौकरी हो गई. लॉ ऑफिसर्स का टाइम, दिस इज नाउ फॉर श्योर दैट आई कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस जजमेंट, इज विल बी काउंटेड एज प्रैक्टिस. इन हाउस काउंसिल में आप हैं, इन हाउस काउंसिल में आप लेट अस से दैट यू आर एनरोल्ड विद अ रियल एस्टेट कंपनी एज अ फुल टाइम लॉयर. तो लॉयर और एडवोकेट में ये अंतर है दैट एन एडवोकेट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल. लॉयर में फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय, अ टीचर ऑफ लॉ, और मतलब बाकी सबको हम लॉयर कह सकते हैं, बट एन एडवोकेट इज अ पर्सन हु होल्ड्स अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ एंड हु इज एलिजिबल टू प्रैक्टिस लॉ अंडर द एडवोकेट्स एक्ट. केवल जो लोग एडवोकेट्स हैं उन्हीं के 3 साल की प्रैक्टिस ये लोग मानेंगे, दिस आई एम डेड श्योर ऑन पोस्ट दिस जजमेंट, एंड दे विल बी मतलब वही एलिजिबल हो पाएंगे जुडिशरी के एग्जाम देने के लिए. बट law officers also will be included, so law officers under your under the union or under the states, they are also all included. Law researcher, law clerks, they are also all included. But the moment that you get into a full-time salaried, you are a full-time salaried employee. I'm not saying that under a vakil saab, because then also you are quite independent, right? I'm saying that under a bank, for example, ICICI bank के अंदर आपने बैंक में अंदर full time वकील की नौकरी आपने कर ली as an in-house counsel, you are not being treated as an advocate under the Evidence Act as per this judgment under 132 of BSA. And if you're not an advocate under this, basically under the section of Evidence Act, well, you're certainly not an advocate under the Advocates Act as well. And आपको अपना license, I think the bank or any other company will ask you formally to surrender it. Even if you have not surrendered it and if you show it on paper कि आप full time salaried employee थे, मुझे लगता है कि आपकी practice eligibility में दिक्कत आएगी, but this of course eventually has to be confirmed by the courts. So this is what I can deduce from this very recent judgment, even though the judgment is on the privileges that basically the client advocate relationship that exists or attorney relationship that exists under the Evidence Act. उसके अंदर से in-house counsel को बाहर निकाल दिया गया है. एंड देन वो कह रहे हैं 132 नहीं इन पे प्रोटेक्शन मिलेगी, 134 मिलेगी, क्योंकि 132 के अंदर ये एडवोकेट नहीं है. और अगर ऐसा अब इस जजमेंट के अंदर है, देन यू कैन प्रीटी मच बी रेस्ट एश्योर्ड कि अगर वहाँ पे एडवोकेट नहीं है तो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर हम एडवोकेट नहीं गिन रहे हैं, और अगर वहाँ पे नहीं गिन रहे हैं तो 3 ईयर प्रैक्टिस कैसे गिनेंगे. सो इफ यू आर अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय, लेट अस से अंडर अ सीनियर, अंडर अ वकील साहब और साहिबा, बेसिकली फॉर इक्वालिटी पर्पसेस, ये देन इट इज ओके, देन बेसिकली यू आर बीइंग ट्रीटेड एज एन एडवोकेट.